Namaste and a very warm welcome to yet another episode of Social Impact Leaders Simply with Suparna. Of course, we've been focusing on SABERA awardees, and we have a very special person from the northernmost part of India here today. But before I introduce him formally to you, I'd like to start by invoking the higher power. जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, मेरे लिए एक ये जो सरस्वती वंदना है, it has become, well, you can say a matter of practice. Before I start anything auspicious, I'd like to invoke her energies कि वो हमको हमारे जो दिल के जो अंधकार हैं उसको ज्ञान की रोशनी से वो प्रकाशित करे. बहुत पुरानी संस्कृत वर्स है. Do join me in case you're well versed with it. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभूति भी दैवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा. And like I mentioned, I have a very, very special guest here with me today. He's joining me from minus 15 degrees temperatures in Ladakh. Well, thank you so much, Thinlay Norbu, for taking out the time for being here with us. और बहुत बहुत मुबारक, आपको सबेरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोशल एंटरप्राइज कैटेगरी के अंतर्गत. और एक बहुत ही आप मिसाल बने हैं एज अ यूथ आइकॉन स्पेशली इन लद्दाख. और हम जानना चाहते हैं कि ये जो लद्दाख बास्केट है, आपने शुरुआत क्यों करी, कब करी, और लद्दाख बास्केट आखिर है क्या जिस वजह से ये आपको सम्मानित किया गया सबेरा पे. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for the opportunity that you have given me today. So just wanted to say thank you. And yeah, I'm very excited to tell my story, how we have started Ladakh Basket. So basically, we have started just 4 years ago. In 2019, we have started. We have started with 7 farmers, and now we are working with more than 100 farmers. Wow. So we are, yes, we are very happy to share that. सुपर. तो लद्दाख बास्केट बेसिकली फार्मर्स के साथ काम करता है और ये आपने 4 साल पहले शुरुआत करी थी. तो लद्दाख बास्केट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे थोड़े आपको जानने के बाद. तो मुझे बताओ लद्दाख, I mean, I have never been to Ladakh. I'm looking forward to visiting your beautiful union territory now. 2019 में union territory finally बन गई. तो what was it like growing up? बचपन कैसा था आपका लद्दाख में? तो हमारा जनरेशन, जो भी हमारा जनरेशन है, उन लोगों को थोड़ा सा मैं लकी समझता हूँ कि हम लोग ये इंटरनेट के दौर में नहीं रहा, तो हम लोगों को बहुत सारे चीज सीखने को मिला. We used to learn so many things practically in our village. We used to go with our parents. We used to go with our goats, sheep, and then we used to go with our yak for gazing. All this kind of exposure, that I'm very happy for that. Today's generation, people are not getting that kind of experience. That is very saddening to see that. Now, I have been growing on that atmosphere where people live happily, people come together and celebrate their life. I have grown in that atmosphere, so I'm very happy about that. So your influence has been through your parents who have been farmers, right? And that's how you are actually circling back to the wisdom of the land. In fact, मुझे अपनी एक conversation जो गीतांजलि आंगमो के साथ मेरा recent interaction हुआ था over this social impact leader simply with Suparna पर ही, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि there is so much wisdom in our land, but जैसे कि पूरी दुनिया में हो रहा है, हम पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं नई चीजों को अडॉप्ट करने के फिराक में, और उस वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो रहे हैं. इनफैक्ट द होल क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली कमिंग अबाउट प्राइमरीली बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग द विजडम ऑफ आवर ancestors, and that is what you're trying to do, to loop back through Ladakh basket, through organic sustainable farming, etc., right? Yes ma'am.
तो अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं थिनले, तो while we all keep talking about it और हम लोगों को कहीं ना कहीं एक इराटिक जो वेदर कंडीशंस हैं देखने को अब मिल रही हैं, for you who are right there in the Himalayas, what does that mean? What does this climate change mean to you? हाँ, बेसिकली हमारा लद्दाख बास्केट शुरू करने का स्टोरी अलग है कि जब मैं पहले तो मैं बचपन से वहाँ गांव में पढ़ रहा था, तो कुछ पता नहीं चला क्या गांव में क्या, शहर में क्या होता है। गांव में हम लोग इंजॉयली वी हाउ टू से दैट स्पेंड कर रहा था हमारा टाइम। तो आफ्टर क्या हुआ कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जम्मू से किया। आफ्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं वापस गांव चला गया था। तो गांव में कोई बूढ़ा बूढ़ी लोग रहता था। तो एक दिन मैंने पूछा एक बूढ़ी को, 3 बूढ़ी वहां पर एक विलेज में था। तो मैंने पूछा क्या कि हमारा ये यूथ, हमारा जवान, हमारा चिल्ड्रन कहाँ गया बोल के मैंने पूछा ऐसे ही। तो वो लोग ने बोला कि हमारा जवान लोग, हमारा यूथ लोग तो उधर पहाड़ के ऊपर गया, ये बेड वगैरह चढ़ाने के लिए गया। तो मेरे को हैरान हुआ कि ये ऐसा पूछा। तो उन लोगों ने बोला, और दादीमा और एक दादीमा आके बोला मेरे को, थिनलेस शी इज जस्ट किडिंग, ऑल दे वेंट टू ले सिटी फॉर बेटर फैसिलिटीज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज बोला था। तो मैंने बोला, मेरे को थोड़ा सा शौक जैसा हो गया कि सब ऐसे निकल के जाएगा तो लद्दाख कैसा रहेगा, सोच के थोड़ा सा ऐसे ही शौक हो गया। तो दैट नाइट या आई थॉट दैट आई नीड टू डू समथिंग। वहां से हमारा लद्दाख बास्केट का सपना शुरू हुआ कि उसके बाद हम लोग नारोपा फेलोशिप बोल के एक 1 ईयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करने का हम लोगों को मौका मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने लद्दाख बास्केट शुरू किया। और आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों किया, वही तो है कि अगर सब लद्दाख में 70% लोग गाँव में बसता है, गाँव में रहता है, सब ऐसे निकल के जाएगा, सब ऐसे शहर में निकल के जाएगा, सब ऐसे अर्बनाइजेशन हो जाएगा, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगा। फिर हिमालय को तो कहाँ बचा पाएंगे। यहाँ पर एक गांव में एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर से हम लोग पानी पी के ऐसे बैठा है। लेकिन सब एक जगह पे जाएगा तो ग्लेशियर, वहां पर तो ग्लेशियर का ले सिटी में ग्लेशियर का तो बात ही नहीं। ले में अभी ग्राउंड वाटर ही पीता है, पीने के लिए फ्रेश वाटर जो है ना वो ग्राउंड वाटर से पीता है। हम लोग गाँव में ग्लेशियर वाटर पीता है। लेकिन ये ग्राउंड वाटर जो है ना, बहुत रिसर्च करने वालों ने बोला हम लोगों को कि ये बहुत नीचे चला गया बोल रहे। तो इसीलिए हम लोग ने लद्दाख बास्केट शुरू किया है कि हम लोग अगर जैसे हम लोग एंसेस्टर लोग गाँव में बसता है, तो ऐसे ही हम लोग भी रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा है, लद्दाख रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। सोच के हम लोग ने लद्दाख बास्केट शुरू किया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे आपने यू स्पोक अबाउट दिस, कंसिडरिंग कि जो हिंदू कुश एरिया है हिमालय के अंदर, that actually is that provides water to innumerable, not just India, innumerable nations around it. और Yes. वो ग्लेशियर अगर मेल्ट होने लग गए और उसमें अगर बर्फ नहीं आई, लाइक यू टेलिंग मी राइट नाउ कि इस साल भी बर्फ काफी देर से आई है, राइट? Yeah, this winter, the global warming has impact a lot to Ladakh because we are staying in the top of Himalaya. Yeah, all this pollution has done by the people of downside as well as Himalayan people also doing that kind of pollution. They are not thinking how they are creating impact to our planet and all. But we as a Ladakhi, we as a Himalayan people, we are facing the climate change. Because this winter, this is 23 of February. We have got snow only on 21st of February. Whole winter we didn't get snow at all. Ladakh is solely depend on glacier. People are if there is no glacier, we can't do that farming at all. So we have just only 6 months for farming, but if we don't get snow, then we can't do that farming also. So Correct. That is very, very kind of bad impact for our ecosystem as well as our fragile climate.
Yeah. And as it is, I think the climate or rather the weather in Ladakh or the influences are so tough for agriculture. और इतने कई सेंचुरीज से जो हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया हुआ था एग्रीकल्चर का वहां पर और सस्टेनेंस ऑफ लाइफ का, उसको तो हम भूलते जा रहे हैं. एंड वी आर अडॉप्टिंग केमिकल्स एंड वी आर अडॉप्टिंग मे बी सीमेंट इवन इन बिल्डिंग आवर ओन हाउसेस. आई मीन कमिंग बैक टू माय कॉन्वर्सेशन विद गीतांजलि आंगमो, वो सोनम वांगचुक के साथ ये हिमालयन ऑल्टरनेटिव लर्निंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जिसके थ्रू दे आर क्रिएटिंग इवन दी सस्टेनेबल हाउसेस. मतलब आप सोचिए अगर अभी -15 डिग्री सेल्सियस अगर आपका बाहर है और गर्मियों के अंदर ऑब्वियसली प्लस में चला जाता है विद सच अ वेरी क्लाइमेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ सस्टेनेबल अडेप्टेशन. एंड उसमें अब हमको अपने माइंड चेंज भी, बिहेवियरल चेंज भी करना पड़ेगा. लाइक द कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग अर्लियर दैट व्हाइल मे बी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय लोगों ने केमिकल्स अडॉप्ट कर लिए, बट इन द लॉन्ग रन इट हैज नॉट पेड वेरी वेल. सिमिलरली सीमेंट से हम अपने घर बना ले रादर देन जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है जो सस्टेनेबल है और उसमें कोई आपको आर्टिफिशियल हीटिंग या कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज बेटर व्हाइल इट मे बी एक्सपेंसिव नाउ, but in the long run it is much better, right? Yeah, this is how to say that. Yeah, लद्दाख बास्केट हम लोग ने शुरू किया था ना मैम, तो इसका हमारा कोशिश यही था कि ये केमिकल फर्टिलाइजर को बंद करना, क्योंकि ये हमारा पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इंकरेजमेंट आता है कि इसको अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बोलता है कि ये लोग ये फर्टिलाइजर यूज करेगा तो यूरिया यूज करेगा तो ये बहुत यील्ड आएगा, आप लोगों को बोल के ये सबको लालच जैसा हो गया, तो सब यूज करने लगा विदाउट लुकिंग एट देयर हेल्थ, विदाउट लुकिंग एट द क्लाइमेट हेल्थ एंड ऑल. तो बाद में क्या हुआ कि इन लोगों को अभी हम लोग ने भी शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, सब मिलके हम लोग ने शुरू किया कि ये अवेयरनेस शुरू किया कि ये केमिकल फर्टिलाइजर लद्दाख के लिए अच्छा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं, ये सब के लिए अच्छा नहीं है बोला. तो ये सब लद्दाख की लोग अभी जागरूक होके अभी दे स्टार्ट एडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमारा एंसेस्टर का क्या था कि यही ऑर्गेनिक फार्मिंग था, सब कुछ हम लोग सस्टेन रहता था, हम सस्टेनेबली जो भी कर रहा था वो सस्टेनेबली कर रहा था. तो अभी अब लोग आपने बोला था सीमेंट के बारे में, यही तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह ही है. तो पहले तो ये लोग सीमेंट क्या बोलते हैं, ये सस्ते में मिल रहा है तो सब एडॉप्ट कर रहा है, सीमेंट एडॉप्ट कर रहा है. लेकिन सस्ते लॉन्ग रन में धीरे धीरे ये लोग भी अभी लोकली अवेलेबल है, अर्थ बिल्डिंग बोल के ये सब बनाने में थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, इसीलिए ये सब सीमेंट को ऑप्ट कर रहा है. तो धीरे धीरे इन लोगों को भी मेरा यही एंटिसिपेशन यही है कि ये लोग समझ में आ जाएगा कि ये लोग एडॉप्ट करेगा. लेकिन there is no other way to live sustainable in Ladakh if we are not adopting sustainable way of living. That's what I'm thinking. Yeah. Correct. And not only that, you're paying a little bit of extra amount, but the point is that you are replenishing your soil, right? So that the yield becomes that much better, the product becomes, the quality becomes that much better. I can see some of your stuff lying at the back. Can you show us what all is there? Yeah, these are our products. So basically, what we are trying to do is we are trying to use as much as eco-friendly packaging materials, so that we can give back to society, so that we can giving good to the environment. So spices like thangir, what we call, this is like a spices. So people used to use it earlier time also. Now people are using other kind of spices, which is very effect to their health. Those who are producing this kind of spices, they are not looking at the other people customer health. So we considering our best to give best to our customer. Initially, our ancestors used to have this kind of spices, but inside that we are mixing with herbs called pianku, which is cat mint. Cat mint is very good for our Ayurvedic people are Ayurvedic doctors are using for treating their heart patient and all. ये जो spice है ये किस में डलता है? Yeah, especially in Ladakh, we are especially during the winter time we have that thukpa spices apricot. This is Halman apricot, one of the best apricot from Ladakh.
Though we didn't get that GI tag for how many we got, but this is very much good quality of one and only products of Ladakh. And then this is chamomile tea which we have. Chamomile tea is very much famous in internationally. So if we search in our downside market, we can't get this much colorful chamomile tea. And as color is very good, taste is also good. For health benefit, it is very good. So much order we are getting for chamomile tea. Wow. Till now, we have starting cultivating this chamomile tea. So we are under processing of that, getting more supply from our farmers. We have started with three farmers of cultivating chamomile tea. Now we have more than 25 farmers who are dedicatedly preparing chamomile tea for us. Yeah. So not only are you actually preserving the wisdom of your ancestors and a sustainable way of farming, and also preserving the herbs that they used, which somewhere were getting lost, you're also introducing the farmer to the international trends of the kind of teas or the kind of different kind of produce that they can create within the environments of Ladakh. I think that's brilliant. And also जो आप कह रहे हैं कि 7 almost 100 farmers है अब आपके साथ जुड़े हुए. बेसिकली क्या है कि हमारा मेन मकसद है कि वी वांट टू एम्पावर रूरल प्रोड्यूसर्स. सम विलेज में क्या होता है, विलेज में इतना प्रोड्यूस नहीं होता है कि सेल करने के लिए. अगर बार्ले, ज्यादातर हमारा स्टेबल क्रॉप है बार्ले इतना लार्ज क्वांटिटी में हम लोगों को इतना सेल नहीं कर पा रहा है कि मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ. लद्दाख की गांव साइड वाला बार्ले इतना यूज नहीं कर रहा है. तो इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि अगर कुछ फार्मर के लिए थोड़ा सा अच्छा चीज ला के देगा तो वो लोग कल्टिवेशन अच्छी तरह से करेगा, तो ये डाउन साइड वाला अच्छी तरह से लेगा. तो वहां से साइड इनकम इन लोगों को आएगा, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए. तो हम लोगों ने सोचा जहां पर जिस गांव में थोड़ा सा क्या बोलता है प्रोड्यूस कम होता है, वहां पर हम लोगों ने कैमोमाइल टी डाल के उन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने के लिए बोला. तो वो लोग अच्छी तरह से वो लोग कमा रहे हैं वहां पर गांव में बैठ के. हाँ जी. So you have created also a form of income for the farmers, obviously. Yes. And you are also attracting the youth to stay back and not leave Ladakh for brighter opportunities, maybe in the cities somewhere. Yes, ma'am. फार्मर्स के लिए हमारा ज्यादातर मेन मकसद यही है. फार्मर्स के लिए, फार्मर्स हमारा 100 में से 30 जैसा तो यूथ ही है, फार्मर यूथ है. Means they are also earning their livelihood in their village. We are not saying that we are totally giving their income, but somehow we are helping increase their livelihood in the village, staying in the village. If somebody wants to, and you have managed to create a proper supply chain process, you have also organized your logistics ki Delhi mein baithe ya internationally kahin par bhi baithe kisi ko Ladakh basket ki produce ka ya wo sustainable farming ka ek they want to get a taste of that, they can just simply order online, log on to ladakhbasket.com. That correct? Yes. उसमें क्या है कि पहले हमारा मेन लद्दाख में लॉजिस्टिक का बहुत प्रॉब्लम है. तो लॉजिस्टिक का क्योंकि 6 महीना पहले बंद रहता था, तो ये लोग सोच के अभी अगर हम लोग प्राइवेट लॉजिस्टिक्स पार्टनर से लेगा तो ये लोग पर केजी 600 रुपीज देता है. तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को, कस्टमर को भी बहुत भारी पड़ जाता है, कि हम लोगों को भी बहुत भारी पड़ जाता है. तो हम लोग ने सोचा है कि गवर्नमेंट को मिल के गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके करेगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सोचा. तो हम लोग ने इंडिया पोस्ट के साथ मिला के काम किया. इंडिया पोस्ट ने बोला अगर आप लोग इतना सप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग आप लोगों को रिलायबल सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ बोल के हम लोगों को बोला था. तो वो लोग ने इतना अच्छा किया. पहले जब हम लोग ने लद्दाख बास्केट शुरू किया ना मैम, तो उन लोग ने जब हम स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजता है तो उन लोगों को कम से कम दिल्ली पहुंचने में मिनिमम 6-7 डेज लगता था. अभी इन लोग ने इतना तेज किया कि जब हम लोग ने इतना ऑर्डर किया
कोलैबोरेशन इतना अच्छा हुआ तो उन लोग ने दिल्ली में तो कभी कभार 2 दिन में पहुंच जाता है, दिल्ली में डिलीवर कर देता है उन लोग 2 दिन में। तो बेंगलोर में 4 दिन जैसा लगता है, और हैदराबाद, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल जैसा 4-5 दिन लगता है। बाकी तो सारी जगह तो 1-2-3 दिन में वो लोग पहुंचा देता है। इतना अच्छा तो किया हुआ मतलब उन्होंने। धीरे धीरे करके आप ऑब्स्टिकल्स थे वो जी। आपने हटा दिए, ट्रू टू योर नेम थिनले, हाँ, दैट्स व्हाट इट मींस, दैट रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। या somehow we are into it। So you're ऐसी है। making your parents proud, you're making all the people of Ladakh proud, and we are very grateful for all that you're doing. I will be shortly ordering from Ladakh Basket. I will log on to it and Thank you। explore all the beautiful produce that you have there. Is there Yeah। any one last message that you would like to share through your experience for anybody else or the youth who may want to, do something similar to what you have done? मेरा क्या है कि हमारा जिंदगी में ये जिंदगी तो एक ही बार मिला है हम सबको, तो जो भी कर रहा है तो थोड़ा सा अच्छा करके जाए। वी आर टेकिंग वन स्टेप, इट हैज इम्पैक्ट। सो वो थोड़ा सा सोच समझ के हम लोग करना पड़ेगा, जो भी कर रहा है, जो भी हम लोग एक्शन ले रहा है, तो सबके लिए थोड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सोच जाए हम लोग भी। लद्दाख बास्केट के थ्रू हम लोग थोड़ा सा ये वुमेन को एम्पावर करने का हम लोग कोशिश कर रहा है, और कि लद्दाख को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा हम लोग ये 4 साल ही हुए है, हमारा ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि हम लोगों को लद्दाख में इतना ट्रेंड नहीं था कि ये सब एकदम मार्केटिंग करेगा ऐसा बोल के, जो भी सेल कर रहा है इनफ है बोल के ऐसा माइंडसेट है। उस उन माइंडसेट को ठीक करते करते हम लोग अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, स्केल अप कर रहा है। तो आप लोगों का भी अगर योगदान रहेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो not only for Ladakh basket, for all the farmers who are working so hardly in Ladakh. So that will be great help for us, as well as for our farmer, as well as for our climate, as well as for Ladakh. Yeah, that's what Super. I was Rusha thinking. has a Yeah. question. She's asking, hi Thinlay, the products look super interesting. Apart from your website, do you also have a tie-up with any e-commerce sites? तो ये जो normal online platforms में वहां पर भी मिलता है क्या लद्दाख बास्केट का सामान? मैं अभी तक लद्दाख में वही मैंने आपको बताया था कि सप्लाई में थोड़ा सा हम लोग कम कर रहे हैं। अगर हम लोगों का डर भी ये है कि अगर ऐसा वेबसाइट में डालेगा तो इतना ऑर्डर आ जाएगा तो सप्लाई चेन खराब हो जाएगा, सोच के हम लोग ने इतना माइंडफुली वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर 2-3 साल में हमारा सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो मीन्स कर रहा है अभी हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग आएगा, नहीं तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इवन कि वी आर नॉट डीलिंग विद B2B, बिकॉज if we are dealing with B2B, then we can't get that supply, because Ladakh is very, how to say, harsh terrain, as well as we have only 6 months to grow whatever we are growing. Correct. So Yes. limited production is there. So keeping on that, we are not on other platform. We are only selling on our own platform, as well as in Ladakh, you will get in some offline store. Yeah. अच्छा, एक follow up question भी है रुचा का. She's asking you, do you have an opportunity if people wish to see your farms or organic farming practices जो आप वहां पर करते हैं, तो कुछ एक agro-tourism kind of thing, are you open to? Yeah, very much excited about that. In April we are open for agro-tourism. What we are doing, why we are starting is because giving product to customer is not only solution. Mm-hmm. Giving awareness to the who are coming to Ladakh is also very important for saving the planet, saving the earth, saving the farmers. So that's what Right. we have been thinking, and very happily we are launching that in April, agro-tourism in our own village, Dikse village. Yeah. So if somebody wants to visit, तो they have to keep a note of Ladakh basket. वहीं पर ही आप announce करेंगे कि कैसे करना है, कैसे yes, सब कुछ April first week में हम लोग we will be open on our website what to do, what not to do when you are visiting our village, and all this kind of thing we are going to launch it.
I think also another aspect which this will open up is responsible tourism. In fact, we have, another SABERA awardee who's very active, Utsav Pradhan. He's in Darjeeling, TD करके उनका एक organization है, and they're very focused also on responsible tourism and consumption. कि हम बुलाते तो हैं लोगों को, but then you should also respect the place that you're visiting. You can't be leaving behind your footprint in terms of your plastic waste, etc. पहले तो consume ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर in case आपने किया है तो उसको responsibly आप dispose of करें उसको, you leave it maybe better than what you had visited it. So that's also an important aspect. हम लोग पढ़ रहा था तो ट्रैकिंग गाइड भी कर लेता था मैं वहाँ पर 2015-16 में। तो क्या होता था वहाँ पर लद्दाख में सिर्फ ट्रैकिंग करने वाला और हाइकिंग करने वाला, क्लाइंबिंग करने वाला सब आता था, और ज्यादातर भी वो फॉरेन टूरिस्ट वाला आता था। वो लोग सब ऐसे टूरिज्म ऐसे क्या बोलते हैं गांव-गांव में जाता था और ट्रैकिंग करता था, ये सब करता था। तो उसमें टूरिज्म में भी बहुत कंट्रोल था। उसके बाद 2009 में तो पूरा ये ट्रैकिंग वगैरह तो बहुत ही भूल चुका है, लेकिन सब एडवेंचर के लिए आ रहा है, सब थोड़ा सा लद्दाख का पेंगोंग लेक और 2-3 लेक है उसको देखने के लिए आ रहा है, बाकी तो कुछ ऐसे खास नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि लद्दाख प्रिपरेशन नहीं था, इतना टूरिज्म को कंट्रोल करे इतना प्रिपरेशन नहीं था, ऐसे इमीडिएटली ऐसे बूस्ट हो गया। तो इसीलिए बहुत टूरिज्म की वजह से भी बहुत लद्दाख के क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट लद्दाख में आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और टूरिज्म का इनकम भी अभी अब अगर देखेगा तो लद्दाख का सिचुएशन ऐसा है कि एक होटल वाला को ये इनकम मिल रहा है और एक टैक्सी वाला को इनकम, तो क्या है इनकम भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। मीन्स गाइड को मिलता था, हेल्पर को मिलता था, पुणे मीन्स हॉर्स वालों को मिलता था, होम स्टे वालों को मिलता था, सबको ऐसे बांट के दे रहा था। मीन्स अभी तो इनकम भी ऐसा हो गया और इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो गया। मीन्स लद्दाख को पॉल्यूशन करने में एक ले आ रहा है और पेंगोंग थो जा रहा है और नुब्रा जा रहा है, बस 3 जगह में जा रहा है, फिर एक हफ्ते में वापस भी जा रहा है। तो इसीलिए मीन्स एक ही जगह पर बैठ के पॉल्यूशन भी कर रहा है और थोड़ा सा 1-2 आदमी को होटल ओनर और ये कार ओनर को इनकम मिल रहा है, बाकी किसी को इनकम नहीं मिल रहा है। तो लद्दाख भी टूरिज्म को भी सस्टेनेबल तो बिल्कुल नहीं है, और इसको भी थोड़ा सा सस्टेनेबल करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। So to maintain a sustainable way of income, even in terms of tourism, so of course we have to look at responsible tourism. So if you are also inviting people across to the interiors of the farms as to how the farming and sustainable practices, but you'll also have to ensure कि भैया ये हमारे गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये तो हमारा तो मकसद ही यही है मैम। तो अगर लद्दाख में कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो लद्दाखी की तरह रहना पड़ेगा। That's what I think. That's the fun of traveling, I think. Otherwise, if they are coming to Ladakh and living like urban people, like staying in Delhi or Bangalore or Mumbai, then it doesn't make sense of traveling here in Ladakh. So I recently saw a small video on Instagram, and that kind of, just put everything in perspective. That person was showing कि एक जैसे बर्फ नीचे गिरी हुई है, बर्फ के अंदर एक पत्ता गिरा हुआ है, एक एकॉर्न गिरा हुआ है, या कुछ भी जो भी गिरा हुआ हो, चाहे प्लास्टिक भी गिरा हो या कुछ भी गिरा हो, नेचुरल चीज भी गिरी हो, तो ऑटोमेटिकली जो सनलाइट है वो उसको अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि पत्ता हरा है या कोई और चीज ब्राउन है या वो है, और वहां पर वो बर्फ पिघलने लग जाती है, एज अपोज टू बाकी जितनी भी बर्फ है वो सफेद है, तो वो सनलाइट को ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करती है और मेंटेन करती है, एंड दैट्स हाउ द ग्लेशियर्स आर आल्सो फॉर्म। लेकिन जब हम जाते हैं, इंट्रूड करते हैं, नेचुरल चीजें तो छोड़ो, अगर हम प्लास्टिक और चीजें कब करने लग जाएंगे तो कितना ज्यादा इफेक्ट होगा स्नो के ऊपर, दो दैट ऑलरेडी द प्लेस इज सफरिंग एंड वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट
maybe we can introduce you to Utsav Pradhan in Darjeeling, जो जिस तरीके से वो सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं, या सस्टेनेबल फार्मिंग तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सस्टेनेबल टूरिज्म कर रहे हैं, हाँ, तो उससे भी you can probably learn something from them as well. Yes, yes. We are in research phase, so definitely come with this sustainable way of tourism. Yeah. Super. Thank you so much, Thinley, for taking the time. God bless you. I, for one, will be ordering from LadakhBasket.com, and I encourage everybody who's seeing or will see in the future to give a chance to the youth of Ladakh, give a chance to the ancient wisdom of Ladakh, that people, that young, men like Thinley Norbu are doing in Ladakh. So grateful for your work and congratulations on your win, and take care, and hope to meet you in person soon.